Alright. So we'll go to this URL. If you want to follow, you can follow along. Once you go to the URL, you will say sign up for Tableau Public. You'll sign up for Tableau Public. You will give your name, okay, and you'll give your email address. Okay. You'll give some password. Okay. You'll have to check this mark saying that you agree, and you will select. Okay. You can select India too. I am not a robot. You'll say create my account. So as soon as it's done, it will say verify your account. Click to verify. Be sure you verify within 5 days. Okay. So you'll get an email, um, and you can verify your account. Okay. So maybe I can just open that account again. So here's Tableau. This is the email that I received from Tableau. All I have to do is just click verify now. As soon as I do that, it says my account is verified. Okay. So now that my account is verified, first thing I have to do is I have to create a visualization now. Okay. There are a couple of tabs here, which is resources, and so on. So I'll go on create. I'll go on web authoring. Okay. So as soon as I do that, it opens a visualization thing, where I'm going to start my visualization. Very first thing it asks you, since you're creating a visualization, what kind of data are you going to use? What is the data that you are going to use for visualization? Okay. So this is when we go back to our, so here we will go to this link. Here we have some sample data from Tableau itself. This is the sample data from Tableau. Okay. And we are going to download this data, which is Netflix movies and TV shows. Okay. We download this. Okay. So sometimes it will open, sometimes it will download. Just make sure that you download the file. Okay. Now the file is downloaded. I will go back to my Tableau thing here. Okay. Here I'm going to connect the data. So when I say connect, I'll just upload from computer. I'll select this. I'll say open, and it's getting uploaded now. All right. Once it is uploaded, I will have some options here on the left side. Okay. Now these are nothing but my tabs. Okay. If you see the data that I just now downloaded, this is the data file, right? This is the data file, and you'll have multiple tabs here. So Netflix titles, Netflix title directors, then title and countries. This is again title and cast, who are the people present in that movie, and so on. Okay. And this is categories. What kind of movie is that? Okay. So what I have here is I have multiple tabs, and same tabs will be seen here. Same tabs will be seen here. Okay, on the left side. What you have to do is you have to select one and drag one here. Okay. As soon as you do that, now you're selecting one of the sheets. Okay. Now you're selecting one of the sheets. I'll go back here and I'll check the data again. So keep going back and forth just to check the data.
Okay. Then you have category here. Okay. Netflix category and show ID. This show ID that you have here in this particular column is same as the ID that you have here, the show ID that you have here. So what I'm going to do is I'm going to join these two sheets together. How do I do that? I go here, I'll select show ID, director categories, categories, right? Just a second. So Netflix title categories, right? So Netflix titles categories. I'll drag this and I'll drop it here. As soon as I'm dropping, I'm seeing this orange color thing. Okay. So this orange color thing, you have to click on that link. Here, basically what I'm trying to say is whatever is present in this Netflix titles, I'm joining this show ID with this ID so that I can get the category of that particular Netflix show. Okay. So here you'll see Netflix titles. This one, Netflix titles show ID is equal to Netflix titles category, Netflix title category show ID. Okay. So that's the only relationship that I'm creating here. Okay. As soon as I create the relationship, first thing I'm going to do is save this by saying Control S. Okay. Once I do Control S, it is going to create an extract. Okay. Extract is nothing but it is actually going and pulling the data. All right. It's actually going and pulling the data and creating a in-memory kind of a thing, which will be faster than doing it runtime. So that's what it's doing. Okay. So, and here what I'm going to do is give a name to this workbook. So let's say we are saying Netflix analysis or Netflix. Netflix. Okay, just a Netflix analysis. Okay. Uh, I'll just select this show sheets as tabs and say publish. Okay. As soon as I do that, this is where it takes me. Okay. Now Tableau has some sections here. Okay. Some this UI has some different options that you see. Okay. First is this data source. This data source is the same tab from which we came just now. Okay. So by accidentally, if you go to data source, make sure you click on the sheet one. Sheet one is where you're going to uh, create a visualization. Okay. So similar to your Excel, you'll have multiple sheets here. So this is sheet one. You can add a sheet here. It is called as worksheet. So I'll say worksheet here. I can also create a dashboard. We'll get to dashboard after some time, but for now, just keep adding worksheets. Worksheet one, worksheet two, and like that. Okay. On left side, you'll have two options. Option number one is data. Option number two is analytics. Okay. If I go to analytics, it will show me some advanced options. Okay. Such as creating box plots, creating a trend line, having a reference line, and so on. Okay. We are not going to use this for now. This is very useful for data science, by the way. Okay. So, but we are going to start with data first. Okay. In data tab, we see this is my connection. Okay. This is my connection. Here I can search whatever is present in this particular list. Okay. And this list is divided like this. So if I just collapse this, right, there are two tables here. Table number one is my sheet number one, right? Netflix titles. This is my table number one. Similarly, table number two is the second table, which is Netflix titles category. This is my table number two. Okay. Now, if I open this, inside every table, I'll have some columns, right? These are all columns that I have, right, in the table. So this first row is a column. What is the column? Date when it was added.
data added, description, whatever the description is here, this is the description, duration, how long that movie or how long that show is, season, how many seasons if it's a show, what is the rating of it, when was it released, what is the idea of that show. Okay, then the title and type. So type here is it a movie or a TV show? Okay, that's the type. Same thing for the second tab. We'll have listed in, and we'll have a show ID, right? So if you go to here, you'll see there are two columns. Column number one is listed in, column number two is show ID. Show ID, listed in. Okay. Now, if you see one table at a time, okay, let me collapse this so that we can just see one table. Now, this one table has two sections. Section number one is until this gray line, which you see here. Okay. Section number two is after the gray line. What this means is anything which is above this gray line is a qualitative variable or a text variable. Okay. Anything which is below this gray line is a quantitative variable. Okay. And we have seen in the data science sessions what's the difference between qualitative and quantitative, right? Qualitative are text variables which cannot be ordered. You can still order them if it's a ordinal type, right? But for now, let's just say that these are qualitative variables, and then these are the numeric values that you have after this gray line. Okay. In this particular example, there is only one numeric value which is by default added by the Tableau, which is count, which basically counts how many of these values do I have. Okay. Same thing goes for the second table. Two sections. Section number first is this qualitative variables. Section number two is your quantitative or numeric variable. Okay. More. Okay. So this is about the data that is on the left side. Your data source is sheet. Okay. Here you have some marks. Okay. I'll talk about this in some time. Second main part is the sheet. This is where your visualization is going to be created. Okay. Now, anytime you create a visualization, you have a x-axis and you have a y-axis. Okay. Similarly, rows are your y-axis. Columns are your x-axis. Right? You will also see icons here. So vertical means y-axis, right? Horizontal means x-axis. Sorry, horizontal means when you draw them, they will be seen as horizontal like this. Vertical means when you draw them, it will be seen as verticals like this. So what I'm going to do now is I want to create a visualization which tells me every year how many Netflix titles are getting released. ठीक है, ये मुझे विजुलाइजेशन बनाना है. अगर हर साल कितने नेटफ्लिक्स टाइटल्स बन रहे हैं ये विजुलाइजेशन करना है, तो मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, ईयर रिलीज को यूज करना है मुझे, क्योंकि रिलीज ईयर की जरूरत है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, एनीथिंग विच इज ग्रीन इट इज कंसिडर्ड एज अ न्यूमेरिक वेरिएबल. तो मैं सबसे पहले तो इसको चेंज करता हूँ. इस चेंज करने के लिए मैं आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और इसको बोलता हूँ स्ट्रिंग. ठीक है, इसको बोलता हूँ स्ट्रिंग. एज सुन एज डू दैट, वो एबीसी हो गया अभी यहाँ पे. ठीक है, इसको आप ठीक है स्ट्रिंग बोल दो और इसको आप ड्रैग करके कॉलम्स में डाल दो यहाँ पे. ठीक है, I'm dragging it. सिलेक्ट करो, ड्रैग करो, कॉलम्स में डालो ऐसे. ओके, डोंट वरी, फास्ट हो रहा है नो, बट आई एम गोइंग टू शेयर द रिकॉर्डिंग टू, राइट. ओके, डोंट वरी, हम लोग करेंगे फिर से थोड़ी देर में एग्जांपल. फिर मैं क्या करूंगा, नेटफ्लिक्स टाइटल्स को कॉपी ड्रैग करूंगा फिर से और रोज में डालूंगा ऐसे. ठीक है, अब देखो, जैसे ही मैंने वो किया, मैंने क्या बोला था आपको, जो एवरी ईयर कितने कितने रिलीज हो रहे हैं उनका काउंट मुझे देखना है. आ गया यहाँ पे. 2019 में कितने हुए, 843. 2018 में कितने हुए, 1063. 2017 में कितने हुए, 954.
Okay, these many number of shows are present in Netflix. Now you'll see some data on 2020 because the data is limited. 2020 का आधा ही डेटा है हमारे पास, पूरा डेटा नहीं है। इसके बाद में आप जब डेटा देखोगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा डेटा देखते ही कि जिसमें सबसे लास्ट वाली डेट कौन सी है यहाँ पे है। तो हम लोग ये डेटा में जाते हैं। थोड़ा स्लो है ये आज। एनेबल एडिटिंग नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, मैं इसको सॉर्ट करने वाला था इससे, शायद से इससे हो जाएगा सॉर्ट डिसेंडिंग। ठीक है, ये देखो 2020 का जो डेटा है बहुत कम रोज है, 2021 का तो डेटा है भी नहीं हमारे पास पूरा। ठीक है, दैट्स व्हाई यू हैव लिमिटेड डेटा हियर। यू हैव सम गार्बेज वैल्यूज टू हियर। ये जो है 8019194, ये गार्बेज वैल्यूज है, इनका कोई मतलब नहीं बनता है। नल मतलब क्या, मतलब मुझे पता नहीं उनके बारे में कुछ भी। ठीक है, we'll see how to handle that, but for now just see how we created a visualization. All we did before we created this visualization was select Excel sheet and then identify what are the columns, what are the data types of the columns. उसके बाद में हमने सोचा कि ओके, नाउ दैट आई हैव दिस डेटा, आई वांट टू डू अ विजुअलाइजेशन। हमने वो विजुअलाइजेशन पहले हमारे दिमाग में क्रिएट किया कि मुझे क्या बनाना है, मुझे हर साल कितने नेटफ्लिक्स के टाइटल्स आ रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, वो बनाना है। ठीक है, हमेशा वैसे ही स्टार्ट करना, ऐसे नहीं स्टार्ट करना कि अ, अभी टैब्लो आ गया चलो मैं कुछ तो बना के देखता हूँ इस पे, वैसे नहीं। पहले सोचना है क्या बनाना है। कोडिंग के वक्त भी वैसे ही करना है, पहले सोचना है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। ठीक है, करना क्या चाहता हूँ, अगर वही बन रहा है तो आपका सही हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो अभी मैंने सबसे पहले सोचा कि मुझे एवरी ईयर बनाना है, तो फिर मैं, अगर आप पेन और पेपर इजी जाता है तो फिर पेन और पेपर पे देख लो पहले निकाल के। ठीक है, ये ऐसा ऐसा दिखना चाहिए मेरा ग्राफ। जब आपको लगेगा मेरा ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए, तभी आप टैबल्यू ओपन करोगे और वैसा बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, डोंट गो रिवर्स। आप टैबल्यू पे देखोगे फिर आपका फेल हो जाएगा, आप कर नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये सब फिक्स करते बैठोगे। उसके लिए सबसे पहले अपने दिमाग में क्लियर रखो व्हाट यू वांट टू क्रिएट। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स वन। ठीक है, अब इसको मैं नाम देता हूँ ये शीट को। तो शीट को नाम देने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे नाम दे देता है हम लोग, इसका नाम देंगे हम शोज पर ईयर। ठीक है, ओके बोल देता हूँ। ये शीट वन है, इसको भी नाम देता हूँ। यहाँ पर भी डबल क्लिक करने से नाम चेंज होता है। ठीक है, इसको भी बोल देता हूँ शोज पर ईयर। अभी ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, अभी पता चल रहा है मुझे ऐसे, शोज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू डू इज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शोज। ठीक है, जब मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक तो टीवी शो है, दूसरा मूवी है। तो मुझे पता करना है मूवी कितने और टीवी शोज कितने। ठीक है, मूवीज कितनी या फिर टीवी, मुझे बस हाईलाइट करना है, समझ लो यहाँ पे। ऐसे ये एक कलर में है ना अभी, तो मुझे क्या बताना है, इसमें से शोज कितने हैं और मूवीज कितने हैं वो पता करना है। ठीक है, तो वहां पर ये मार्क्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर एक मार्क्स की जरूरत पड़ती है। मैं क्या करूंगा, वो टाइप को जाऊंगा और वो टाइप को ड्रैग करके कलर पे डाल दूंगा, कलर पे। ठीक है, कलर पे डाल दूंगा यहाँ पे। as soon as I do that, see what I'm seeing here, this is my movie, this is my टीवी शो, और यहाँ पे मेरा लेजेंड आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा लेजेंड आ गया। बीच बीच में सेव करते रहना है इसको कंट्रोल एस से। बीच बीच में इसको सेव करते रहना है कंट्रोल एस से, सो दैट यू डोंट लूज थिंग्स। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अभी मैं अ, इसको पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है मुझे। ठीक है, ओके, अभी लेट्स से मैंने ये काम कर दिया और मेरा ये सेव करके रखा है और मुझे एक्सेस करना है इसको। ठीक है, तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग, तो सेम, सबसे पहले तो आपका जो प्रोफाइल रहेगा उसमें जाना है।
प्रोफाइल का जो लिंक रहेगा वो पब्लिक, यही लिंक रहेगा आपका, राइट? ये जो आपने टैबली में सबसे पहले लिंक किया जो है, वही रहेगा आपका। ठीक है, तो आप अपने अकाउंट में जाओगे, माई प्रोफाइल में जाओगे, और यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन दिखेगा आपका। दिख नहीं रहा है मेरा यहाँ, क्यों नहीं दिख रहा है मेरा? यहाँ 1 तो लिखा है। ठीक है, आ गया, रिफ्रेश करना पड़ा मुझे, लेकिन आ गया। देखो मैंने विजुअलाइजेशन करते ही यहाँ पर आ गया। अभी समझ लो मैंने ये सेव किया एक बार और इसको क्लोज कर दिया। तो मैं मेरे प्रोफाइल में गया, कैसे गया? मैं मेरे प्रोफाइल में गया यहाँ पे, और यहाँ पे विजुअलाइजेशन पे क्लिक किया। कभी कभी नहीं आया तो रिफ्रेश करके देखना है उसको एक बार, और फिर मुझे इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही ये मुझे दिखाएगा विजुअलाइजेशन। अभी थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, लोड हो रहा है शायद से। ये देखो इसका नाम आ गया शोज पर ईयर। लोड हो रहा है अभी भी, बस स्लो नहीं रहना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, रुको। इस पे क्लिक करता हूँ मैं, और हो जाना चाहिए इस पे क्लिक करने से ओपन तो। ठीक है, सब पता नहीं इसको क्या हो रहा है, बट यहाँ पर एक आइकॉन है। ठीक है, एडिट का आइकॉन है ये, यहाँ पर एक एडिट का आइकॉन है। आपको एडिट के आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे उस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये हमने वही है जो सेव करके रखा था पहले। ठीक है, अभी ये विजुअलाइजेशन आपके पास बन गया। ठीक है, विजुअलाइजेशन बनाने का रीजन क्या था? एक स्टोरी बतानी थी मुझे। क्या थी वो स्टोरी? कि 2004 के बाद से नंबर ऑफ टीवी शोज बढ़ गए एज कंपेयर टू मूवीज, राइट? एज कंपेयर टू मूवीज नंबर ऑफ टीवी शोज बढ़ गए। 2019 में तो ऑलमोस्ट उतने टीवी शो जितने ये थे मूवीज। नेटफ्लिक्स की बात हो रही, सिर्फ नेटफ्लिक्स पे। हो सकता है टीवी शोज पहले भी थे, लेकिन नेटफ्लिक्स में वो अभी तक पब्लिश नहीं किया उन्होंने। ठीक है, 1988 शायद से, दिस इज द ईयर व्हेन देयर वर सम मोर। ठीक है, जो भी हो, तो दैट्स द स्टोरी दैट आई वांटेड टू टेल यू, एंड this is how you have your Tableau created and real. Let me go back and stop recording this, and then we can start discussing things. Okay, where is the, okay, how do I stop recording? Okay, first thing I have to do is maybe stop presenting. Okay, there you